Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of today's presentation is retinal break and rheumatogenic retinal detachment. Specific learning outcome. By the end of this presentation, residents will be able to describe retinal break, its types, management, and treatment. Rheumatogenic retinal detachment, along with its symptoms, signs, and differential diagnosis, and proliferative vitreoretinopathy. Starting with the retinal break develops as a result of traction at the site of vitreoretinal adhesion. It occurs in 1 in 5 eyes with symptomatic PVD. The retrohyaloid fluid gains access to subretinal space in presence of a break. The clinical features, timing, break presents soon or after the onset of PVD. Location, the retinal break is more common on upper retina and more common temporally. Macular holes are rare with PVD. Morphology, there are 5 types of retinal break: U tears, operculated tears, retinal holes, dialysis, and giant retinal tears. We'll look at these types one by one. This picture here shows U tear. It consists of a flap. The apex is pulled anteriorly by the vitreous. So what happens is a U-shaped tear forms, and the base is attached to the retina while the apex is pulled anteriorly into the vitreous by vitreous adhesion. Operculated tear. In operculated tear, the flap is completely torn away from the retina by detached vitreous gel, and there is a round or oval break. The separated retinal patch can be seen suspended in the vitreous. Retinal hole. Retinal hole is a small round or oval hole. It is smaller than tears and it carry low risk of retinal detachment except in young female myopes, and it may occur in latest degeneration. Dialysis is a circumferential tear along ora serrata. It is usually a consequence of blunt ocular trauma. The vitreous gel remains attached to posterior margin and a large, very peripheral break with rolled edges. Here are the rolled edges you can see. Giant retinal tear. Giant retinal tear is a variant of U tear and it involves 90 degrees or more of the retinal circumference. The vitreous gel remains attached to the anterior margin of the break. Management approach is less aggressive prophylactic treatment of asymptomatic and operculated breaks. Observation and patient education. The break is usually observed and the patient is educated about if any new symptoms develop. The patient is instructed about symptoms of vitreous and retinal detachment, and written information is given to the patient. The patient is instructed to seek urgent review in case of new visual symptoms. Risk factors for progression to detachment. History of retinal detachment in the fellow eye, prior cataract surgery, myopia, family history of retinal detachment, systemic conditions such as Marfan syndrome, Ehlers-Danlos, and Stickler syndrome, symptomatic breaks associated with PVD, size, large breaks carry higher risk, persistent vitreoretinal traction. U-shaped tears are at higher risk because there is a constant pull of vitreous on the tear. Location severe breaks are at higher risk because of the protective effect of gravity on inferior breaks, which is not present superiorly, and macula is threatened in retinal detachment in supratemporal breaks. Pigmentation around the breaks indicate chronicity and stability. Aphakics are at high risk because the IOL is not present, which acts as a barrier to the vitreous coming into AC. Acutely symptomatic U tears, there's a 90% risk of it progressing to retinal detachment, and treatment reduces the risk to 5%. And in asymptomatic U tears, the risk is there's a 5% risk of progression. So the risk is almost same in treated or asymptomatic U tears. Operculated tears, if asymptomatic, they carry a low risk of progressing to complete retinal detachment. Traumatic retinal breaks should always be treated.
Treatment techniques. There are two treatment techniques for treating retinal breaks: laser and cryotherapy. Laser retinopexy. The first type of treatment we look at is the laser retinopexy. This is the machine with which this laser is done. Right. So the laser is the optimal technique and it is more precise. It causes less collateral damage and there's a lower risk of epiretinal membrane formation. There's a slit lamp delivery. The topical anesthesia is given to the patient. It is done under topical anesthesia, alkene usually. And the settings under which laser is done is there's a duration of 0.1 seconds and a spot size of 200 to 300 micrometers. Starting power of 200 millivolt is used and the 3-mirror contact lens is placed in the patient's eye. Power is adjusted to obtain moderate blanching and lesion is surrounded with 2 to 3 rows of confluent burns. This is the picture of laser retinopexy after treatment. This shows a U tear and the two rows of blanched retinal shots given. This shows a retinal hole and retinal hole after the laser is given. The second type of treatment is cryoretinopexy. In cryoretinopexy, this is done under subconjunctival or regional anesthesia. The lid speculum is used in this type of technique and treatment temperature is usually minus 85 degrees centigrade and a single row of application is used. This shows the cryoretinopexy. It is done under binocular indirect ophthalmoscopy. This procedure is done under indirect ophthalmoscopy. Okay, this picture shows cryoretinopexy. While viewing with indirect ophthalmoscope, indent sclera gently with tip of the cryo probe. The sclera is indented to look at the site where the break is present, and the break is frozen and freeze break until sensory retina just turns white. This was pigmentation and chorioretinal atrophy following prophylactic cryotherapy. After treatment, the patient should avoid strenuous physical exercise for at least 1 week until adhesions form, and he should come for review after 1 to 2 weeks. The second topic of today's presentation is rhegmatogenous retinal detachment. Do you guys have any idea about rhegmatogenous retinal detachment? Okay. Yeah, right. Yes. Okay, so rhegmatogenous retinal detachment, it occurs in 1 in 10,000 of the population, so it's quite common. It is characterized by a presence of retinal break with vitreoretinal traction that allows accumulation of liquefied vitreous under the neurosensory retina, separating it from the retinal pigment epithelium. Here this picture shows there is a retinal tear, and once there is a tear, the fluid gains access to the subretinal space and causes the tear between the two layers of the retina, between the neurosensory retina and the retinal pigment epithelium. 40% of the rhegmatogenous retinal detachment occur in myopic eyes. The higher the refractive error, the greater is the risk. Vitreous loss in cataract surgery and after laser capsulotomy also carry greater risk in high myopes. Identification of the break. The distribution of the break. The break is very common in supratemporal quadrant. 60% of the break occurs in supratemporal quadrant, 15% occurs in the supranasal, 15% in infratemporal, and 10% in infranasal. So always look at the supratemporal quadrant when viewing a patient who is suspected for retinal break or retinal detachment. Configuration of subretinal fluid. Its spread is governed by gravity, anatomical limits of ora serratum optic nerve and location of primary break. Modified Lenkoff's rule. Lenkoff's rule tells about the location of break by looking at the pattern of detachment. Okay.
If there's a shallow break inferiorly, the fluid level will be higher on that side. For example, here in this picture, you can see that the break is present temporally, and the fluid level is higher on that side. If the primary break is at 6 o'clock position, the break will be equal on both sides. This is the optic nerve. This was optic nerve and equal fluid levels on both sides. And if there is a bullous retinal detachment, it means that the break is above the horizontal meridian. If the break is on nasal quadrant, the break will be the fluid will move downwards, cross the optic nerve, and then it will come on the same level on the opposite side of the tear. And if there is a complete detachment with a superior wedge of attached retina, it means that the break is present on the upper border in a periphery. This shallow inferior retinal detachment with subretinal fluid higher on temporal side points to break inferiorly on that side. This one, which I just mentioned. Symptoms. Symptoms of rhegmatogenous retinal detachments will be flashing lights, floaters associated with acute PVD, curtain-like relative peripheral visual field defect, and it can progress to involve central vision. The involvement of central vision is usually most commonly because of involvement of fovea by the subretinal fluid, and other rare cause could be the obstruction of central vision by the detached retina when it comes in front of the macula. The symptoms are not present on waking up in the morning because the fluid gets absorbed overnight, and then symptoms appear later on in the day when the fluid builds up again. The quadrant in which field defect appears helps in locating the retinal break. The break will be in the opposite quadrant. Signs. General signs will be RAPD will be positive in extensive retinal detachment. IOP will be lower by 5 mm HD compared with the normal eye. There will be a presence of mild iritis. Tobacco dust restores pigments in anterior vitreous, pigments, blood cells, and inflammatory cells. This is a picture of tobacco dust. It shows pigmented cells in anterior vitreous. Retinal breaks appear as discontinuity in retinal surface, and breaks appear red because of contrast between the retina and choroid. The break appears red. Retinal signs depend on duration of retinal detachment. The fresh retinal detachment is convex. It has convex configuration and has opaque and corrugated appearance and loss of underlying choroidal pattern. The subretinal fluid extends up to ora serrata. Macular pseudoholes can be seen, and B-scan ultrasonography shows good mobility of retina in vitreous in fresh retinal detachment. This is a picture of fresh retinal detachment which shows the corrugated appearance. Long-standing retinal detachment. In long-standing retinal detachment, retinal thinning is seen secondary to the atrophy. Intraretinal cysts develop if retinal detachment has been present for a year or more. Subretinal demarcation line caused by proliferation of retinal pigment epithelial cells at the junction of flat and detached retina. This picture shows long-standing retinal detachment, and it shows the retinal cyst. This picture shows retinal cyst, and here this picture shows B-scan ultrasonogram demonstrating cyst, and this shows pigmentation, demarcating line surrounded by inferior subretinal fluid. Proliferative vitreoretinopathy. Proliferative vitreoretinopathy is caused by epiretinal and subretinal membrane formation, contraction of which leads to traction on retina and retinal fold formation. I found this picture on YouTube. It also gives a concept of understanding proliferative vitreoretinopathy. In proliferative vitreoretinopathy, scar tissue forms in sheaths on retina which contracts.
When this scar tissue contracts, this contraction pulls the retina towards the center of the eye and detaches and distorts the retina severely. And proliferative vitreoretinopathy can occur both posteriorly and anteriorly, with folding of the retina both anteriorly and circumferentially. Main features are retinal folds, rigidity, decreasing mobility of retina. There are three grades of proliferative vitreoretinopathy: grade A minimal, proliferative vitreoretinopathy, grade B moderate, and grade C marked. This picture shows the PVR. This shows scar tissue and the retinal folds can be seen here. The grades of the retinal, grade A. In grade A, there's vitreous haze, vitreous pigment clumps, and pigment clusters on inferior retina. This is grade A. Pigment clumps can be seen. In grade B, wrinkling of inner retinal surface, retinal stiffness and vessel tortuosity is seen. Rolled irregular edges of retinal break and decreased mobility of vitreous. This shows grade B with detached retina and with rolled edges of the retina. And in grade C, if it's posterior to the equator, there will be focal diffuse or circumferential full thickness folds, subretinal strands, and if it's anterior to the equator, there's focal diffuse or circumferential full thickness fold, anterior displacement, subretinal strands, and condensed vitreous with strands. This picture shows the grade C PVR. Differential diagnosis of retinal detachment will be attractional retinal detachment, exudative retinal detachment, degenerative retinoschisis, choroidal detachment, and uveal effusion syndrome. Thank you. Okay, the last slide. So how will you animate the text? आपने किया था प्रैक्टिस किया था मैंने किया था लेकिन वो हुआ नहीं था नहीं इसमें होगा भी कि नहीं एनिमेशन कर लेंगे सबसे लेट्स सी ये हम इसको एडिट मोड में लेके आए हैं so we highlight the text and एनिमेशन नहीं हो रही तो अगली दफा वो करना प्रैक्टिस करनी करनी है तो यू कैन छोटे छोटे जो पावर पॉइंट के टिप्स हैं वो भी आने चाहिए बताएं so you can present anything for the benefit of others. So any comment? Good presentation, Daniel. So proliferative vitreoretinopathy, the earliest stage in which the membrane is formed on the macula is called epiretinal membrane or cellophane maculopathy भी कहते हैं ERM. Epiretinal membrane. So it is translucent, many a times not visible. The only indication is wrinkling of the retinal surface and distortion in the vessels, retinal vessels. It seems as the vessels are pulled centripetally, center की तरफ आ रहे हैं. And later on, the epiretinal membrane develops more gliosis, so it becomes more opaque and you can see it. So, how will you identify which investigation would be helpful? OCT. OCT will show you the epiretinal membrane as well as the vitreomacular traction, VMT, so that you can make up your mind that pars plana vitrectomy is helpful in relieving the vitreomacular traction, VMT. Uh, which is the stage before VMT? VMA. Good. Vitreomacular adhesions, VMA.
So, in the formation of macular hole, these are the stages. First, the attachment is there, firm attachment, and the retinal surface is not distorted. In the next stage, there is VMT, vitreomacular traction, in which the vitreous bands pulls on the retinal surface and elevates it above the normal retinal surface. So these are the different nomenclature you should use frequently. In the retinal detachment, whenever you find a break, there can be another break within 90 degree of that break. So you are not satisfied after finding one break only. There may be multiple breaks, and a thorough examination is necessary to find out all the breaks, because the most common cause of retinal detachment surgery failure is not to find the break. So you miss a break and the retina will not be attached after the operation. You have to address all the retinal breaks, and the first thing is to locate all the retinal breaks. And as she has shown nicely, the configuration of the subretinal fluid or the retinal detachment gives you an indication where would be the break, right? So the PVR is more in children. So if you do operation like vitrectomy and these, there are more chances that PVR will develop and will your operation will not be successful. The retina will redetach. So normally people recommend buckling in young patients so that the inner eye, vitreous and retina are not touched, because any insult at early stage is responded by fibrous tissue formation, glial tissue formation. So buckling is preferred in young patients, while vitrectomy is indicated. See, there was an article in Retina. Retina is a good journal of US monthly issues. You can find the latest research in retina. So, how to manage the retinal detachment? This must be covered afterwards. So this is only introduction. Okay, we will discuss the management later on when you present it. OCD पे when we see उनके मेटल तो क्या sign है किस तरह पता लगता है कि मेटल हो रही है क्या सेलोफर मैक्यूलोपैथी है ओसीडी पे किस तरह सर मैक्यूला स्ट्रेटन अप हो जाता है उसका वो जो जो डिप्रेशन है कंटूर है जी वो फ्लैट हो जाता है फ्लैट और वो इन्वर्स हो जाता है हाँ जी इनवर्स हील के भी नीचे से जो है कॉन्वेक्स 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 तो ये ओसीडी पे है तो सेलोफर मैक्यूलोपैथी किस तरह फील होती है हाउ डू यू सी जिस तरह हल्की सी प्लास्टिक की लेयर शीट होती है ना वो शाइन करती है इट्स जस्ट लाइक दैट क्योंकि ग्लिस्टनिंग सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन ग्लिस्टनिंग मेम्ब्रेन बाकी तो सेलोफेन मैग्नेट ईआरएम का अर्ली अर्ली स्टेज है ईआरएम का दूसरा नाम भी है बिल्कुल वही बात और उसमें जो है वो अगली स्टेज की होती है मैकुलर मैकुला के ऊपर अगर आती है तो वो मैकुलर पकड़ पकड़िंग शुरू हुई पकड़िंग मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है कॉन्ट्रैक्ट करने से वो जो है वो क्लोजर आनी शुरू हो जाती है सो मैकुलर पकड़ जो है वो उसकी नेक्स्ट स्टेज है इनिशियली आपको सेलोफेन की तरह नजर आएगी सर आईओपी क्यों लोअर होता है रेड मेटल देखिए ना ये सिलरी बॉडी क्या है प्रोडक्शन का एरिया है प्रोडक्शन ही है ना जी, जी। अगर आपने पढ़ा हो पार्स प्लाना और पार्स प्लाइकेटा ये कंटिन्यूटी किस चीज की है सिलरी बॉडी सिलरी बॉडी आगे कर रही है तो डेफिनेटली सिलरी बॉडी का फंक्शन जब होता है
ये मैं पढ़ी थी क्या उसका लिखा हुआ है पोस्टीरियर एपिस होता है पिगमेंट एपिथेलियम आगे आ रही है तो एंटीरियर भी जो उसका मैकेनिज्म है वो नहीं हो रहा है पोस्टीरियर भी तो एपिस का इंक्रीज है इसलिए आई वो ज़्यादा जो है वो उसके एंगल जो ग्लाकोमा का एक आती है मैलिग्नेंट ग्लाकोमा उसमें एक्वस की मिस डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसमें एक्वस मिस डायरेक्शन तो नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉब्लम प्रोडक्शन के ऊपर यू कैन सी लेटर ऑन। पीछे चला गया सब रेटिनल स्पेस तो इसलिए भी आईपी लोअर है ये हो सकती है रीजन नहीं हो सकती तो फ्लूइड तो अंदर ही है ना, फ्लूइड तो बाहर नहीं गया, फ्लूइड तो बाहर नहीं गया ना, ओवरऑल आई थिंक पूरी बॉडी के प्रोडक्शन के ऊपर वी कैन सी कहीं से ढूंढ लेते हैं क्यों जी आप तो जैसे कोई कमेंट कर व्हाई द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज लो इन रेटिनल डिटैचमेंट relative to the other eye. So 5 millimeter का मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि पोस्टीरियर एक्वस फ्लो होना शुरू हो जाता है इंटीरियरली वो इफेक्ट नहीं होता उसका मैकेनिज्म उसकी मुझे समझ नहीं आई थी कि पोस्टीरियर एक्वस फ्लो है क्या हो गया था आरपी मीन ट्रैक्टर होती है इसके दरमियान फ्लो रहता है आरपी और न्यूरोसेंसरी रेटिना और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम दरमियान क्या आता है सब रेटिनल फ्लूइड वो काम नहीं हो पाता जी जो पॉटी पाया तो फिर वो अंदर की हुई जमा हो जाना चाहिए ऐसी नहीं हो जाना चाहिए नहीं ये तो नहीं होता very good. Okay, we can look for this thing, not necessary. Yeah. और साइंस इसको ड्राइंग आपकी बड़ी अच्छी आपको बनानी चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक आपके होल कहाँ पे है, इस तरह से ये अटैच रेटना जो है वो रेड में आएगी और जो डिटैच रेटना है वो ब्लू में आएगी। फिर जो कंटूर लाइंस किस तरह बनानी है, होल्स किस तरह बनाने हैं, लैटिस को किस तरह तो ये डायग्रामेटिक जो आपकी है ये कैपेबिलिटी ये आप अपने आप डेवलप करें इसको। जब रेटिना का केस देखते हैं तो उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें और उसको दिखाएं कि कौन कौन से रिजनेशन किस तरह से। सो क्योंकि एग्जामिनेशन में बताने वो कहते हैं ना पिक्चर जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, वर्ड्स शायद उतना एक्सप्लेन नहीं करने तो पिक्चर काम करेगा। तो इसलिए एग्जामिनेशन में अगर आप एग्जामिनर को सिर्फ पिक्चर दिखा दें यू अंडरस्टैंड के इसने काम किया है देखा है। और तो ये ड्राइंग जब भी रेटिनल केसेस हैं इनडायरेक्ट से देखें, इनडायरेक्ट पे देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे आपने। इसमें यूजली जो इनडायरेक्ट आपको इमेज मिलता है वो किस तरह मिलता है, अपसाइड डाउन एंड डायरेक्टली रिवर्स। तो उसमें जब पेपर पे पेज पे बनाते हैं तो पेज को आप इस तरह उल्टा कर देते हैं। अब जो आपको नजर आता है उल्टे पेज के ऊपर जब आप बनाते हैं उसके बाद वंस यू विल मेक इट स्ट्रेट तो आपकी वही प्रेजेंटेशन होगी जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन। लेकिन जो विजिबल आपको नजर आ रहा है उसको पेज उल्टा करके उसी तरह बनाते हैं, जो आपको नजर आ रहा है वो बनाते हैं। और जब आपको सीधा करेंगे तो उसकी जो एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन एग्जैक्ट है वो आपको मिलेगी। ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिना। So, what is vitreous syneresis and what is vitreous synchiasis? So, you have to use these terms to explain the mechanism of PVD, posterior vitreous detachment. So, usually patient comes with flashes of light, which is also known as photopsia. Topsia are because of the mechanical stimulation of rod and cones. So when the PVD separates, the vitreous strands separate from the retina, the flashes of light stop. So whenever patient complains of flashes of light, we also ask about floaters and we do a mydriatic fundus examination. Put a drop of mydriasil, dilate the pupil and see the fundus periphery. Okay, so रेटिना में ओरिएंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक मेंटल पिक्चर बनानी पड़ती है, यू हैव टू अपने आप को इतना इन्वॉल्व करना है कि जो आप एग्जैक्ट जहाँ देख रहे हैं वो आप उसको पता होना चाहिए कि मेंटल पिक्चर कहाँ पे है, ये रहती उल्टी है।
ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ा। सर जब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप नीचे देखो तो हमें जो नजर आ रहा होगा वो सुपीरियर क्वाड्रेंट सुपीरियर नजर आ रहा होगा। इन लाइन कौन सा है, अब देखे ना, अगर आप पेशेंट की ये आई बॉल है, अगर आप उसको कहते हैं नीचे देखिए, ठीक है ना, तो नीचे दिखाएंगे तो आपको So how will you differentiate retinal detachment from choroidal detachment? उसकी थोड़ी सी रेडिश अपीयरेंस होगी क्योंकि कोरोइड अटैच हुआ होगा। Any other idea? Here, Good. One. Any other? Topsy नहीं होंगे. Okay. और इंट्राओकुलर प्रेशर उसमें भी बड़ा लो होता है, हाइपोटोनी होती है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? सर क्या है? किसिंग कोराइडल। तो मतलब मैं दोनों साइड से कोराइड कॉन्वेक्स होगा और वो करीब आया होगा। लिक्विड कैविटी इस तरह दोनों साइड में वर्टिकली ओरिएंटेड अगर आप करें तो ये और इट इज़ बेटर टू हैव एन अल्ट्रासाउंड ताकि वो डॉक्यूमेंट करें इन केस अगर आपको नज़र नहीं आ रहा या इवन आप रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएं। ओके, सो हमने डिस्कस किया था हाउ टू डॉक्यूमेंट पीवीआर। एक तो ये फंडस फोटोग्राफ उतार लें, और क्या तरीका है? ओसीटी कर ले, उसमें मेम्ब्रेन नजर आ जाएगी। इफ द मीडिया आर नॉट क्लियर देन अल्ट्रासाउंड बी स्कैन। अल्ट्रासाउंड बी स्कैन पे क्या आएगा पीवीआर में? डिस्कस किया था ना हमने। एक तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है अगर वो पुल कर रही है मेम्ब्रेन, और सेकेंडली हम करते हैं वी यूज द टर्म डायनामिक अल्ट्रासोनोग्राफी। डायनामिक मीन्स वी आस्क द पेशेंट टू मूव आईज और देखते हैं कि वो रेटिना मूव करता है या नहीं। सो वी विल रिक्वायर वीडियो recording for documenting the PVR, the decreased mobility on ultrasound. तो अभी तो हम सिर्फ यही करते हैं कि हम we take a photograph on ultrasound and give a print. But if you want to demonstrate decreased mobility of retina, you will have to have a video clip to demonstrate by dynamic ultrasonography. जो हम रेटिना की मूवमेंट देखते हैं उसके लिए हमें डायनामिक अल्ट्रासोनोग्राफी ही करानी है या वो नॉर्मल जो पेशेंट एक जगह पे मतलब उसका फिक्स्ड विजन है तो भी हमें नजर आएगी? आई मूव करेगी तो आप यू विल बी एबल टू appreciate the movement of the retina in a better way. अगर if the eye does not move, difficult to demonstrate the mobility of the retina. ये टेक्निक और हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? We ask the patient to move eyes. So the retinal examination. रेटिनल एग्जामिनेशन नहीं, किसी और एग्जामिनेशन में भी हम पेशेंट को कहते हैं कि आई मूव करो। डायनामिक और नाम आता है उसमें, उसमें भी डायनामिक्स का नाम आता है सिस्टम। लेंस की अगर सबलेक्सेशन हुई हो और आप देखें तो वो लेंस उसको क्या कहते हैं? फिकोडुलेंस। ठीक है, इसी तरह आइराइडोडुलेसिस भी हो सकता है, आइरिस ऐसे मूव करती है। तो अगर पेशेंट इफ द पेशेंट मूव्स द आइज देन यू कैन अप्रिशिएट द increased or exaggerated movement of the lens or iris. एक ऑप्थेल्मोडायनेमोमेट्री होती है, वो क्या होती है? इंट्राओकुलर प्रेशर की चेंजेस आती है, ठीक है। अब जब बोलता हूँ ऑप्थेल्मोडायनेमोमेट्री,
टर्म है, जब रिस्ट्रिक्शन होती है ना मूवमेंट की, तो उस डायरेक्शन ऑफ एक्शन में अगर आप मूव करते हैं आपके अगेंस्ट, तो पुल पुल होती है, ठीक है, ट्रांसफर प्रेशर पड़ता है। रिस्ट्रिक्टिव और हाँ, वो उसको डिफरेंशियल आईओपी कहते हैं। डिफरेंशियल आईओपी का मतलब ये होता है कि थायराइड में इन्वॉल्व हुआ है जी आई, अपना किसी मसल की रेस्ट्रिक्शन है. So if you ask the patient to move the eye in opposite direction, so that muscle will contract and the fibrosed muscle is also so the eye wall is under tension, the IOP will be more. So if the difference, if the increase in IOP is more than 6 millimeter of mercury, then it is significant. सेक्रोइडल डिटैचमेंट में और रेटिनल डिटैचमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से फर्क होगा? इसमें देखिए ग्रेविटी से ना ये हॉरिजॉन्टल, इसका जो कन्वेक्सिटी है वो हॉरिजॉन्टल होती है, उसका अपर लेवल जो है वो इस तरह है, जबकि कोराइड्स में जो है इट इज वर्टिकल, ठीक है ना, फ्रॉम द साइड्स की तरफ से आता है और ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल होती है। मिड बिटवीन क्या Choroidal detachment does not extend beyond the exit of the vortex veins. That is the lower, the posterior limit. And the anterior limit of choroidal detachment is what is the anterior limit? The choroid extends up to orus. So how will you differentiate retinal detachment from retinoschisis? What is retinoschisis? Regeneration of retina. Regeneration of the retina. जोर से बोलें, आवाज नहीं आ रही. Regeneration of the retina. Retinoschisis is splitting of the retina in two layers. The split usually occurs at what level? नर्व फाइबर लेयर और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। Good. So टू टाइप्स होती हैं, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर पे और एक डीजेनरेटिव रेटिनोस्क्लेरोसिस में ओपियर में, जी और जो जुवेनाइल एक्सरेट रेटिनोस्क्लेरोसिस में नर्व फाइबर लेयर। So, what would be type of visual field defect in retinoschisis and what would be the defect in retinal detachment? We discussed all these points. How to differentiate the two? हाँ. रिलेटिव होगा रेटिनल डिटैचमेंट में और स्काइसिस में। So in retinoschisis, the defect would be absolute because the pathway of the from the rod and bones is affected, is severed, cut. So there will be no sensation. And how will you differentiate the two? By OCT. So what will you find on OCT? The separation of the two parts. You will see half of the retina above and half of retina below. While in retinal detachment, the total full retina will be separated from the RPE. So where we are discussing differential diagnosis. So what is CSR? Central CS corridor. So in CSR, there is also a separation. So how to differentiate between a retinal detachment and CSR? सर सीएससीआर में फुल थिकनेस रेटिनल डिटैचमेंट नहीं होती। मैक्यूला होती है। CSR में ब्रेक होगा, नहीं फोटॉप्सी और फ्लोटर्स होंगे. So see in CSR there is separation of fluid by SRI. So the configuration is similar, Dome shape. but retinal detachment can be extensive. The CSR is limited to macula only. सोर्स ऑफ फ्लूइड जो है ना विट्रियस में से होगा डिटैचमेंट, और सीएसआर में वो कहाँ से है? सोर्स ऑफ फ्लूइड। Okay, thank you very much.